Okay, so in the last class we have discussed, we have learned about the linear independence and linear dependence of a vectors, है ना? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, and that also this last class uploaded in the your YouTube. Okay, so you can just go and learn from there also. So एक सवाल है, let's do a problem on that. तो इन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द ए इफ द वेक्टर्स दीज वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो लिनियरली डिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती थी कि इफ वी जस्ट फॉर्म अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द वेक्टर्स। ओके, और कैसे हम लिखते थे? तो इन वेक्टर्स को हम किस में लिखेंगे? इन कॉलम्स। ओके, तो जैसे कि एक हम यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस मैट्रिक्स इज ए, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा वेक्टर है वी रिटन इन द फर्स्ट कॉलम 1 - 1 and that 3, and the second one that is your 1 2 and 3, and then this is your a 0 and 1. Okay, so if we are have this a, and this rank of a is just equal to uh, uh, if you can just write here, you can just write in this way. If यहाँ पर if rank of a, okay, is just equal to n, n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स, या यू कैन से नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देन वी कैन से वेक्टर्स आर li, linearly independent. If this rank of a matrix is less than n or not equals to n, is number of columns. Okay, so then in that case, this then we can say the vectors are LD. Okay, if number of vectors and number of, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, so if number of rows is just equal to number of columns, it means we have a square matrix. Here we have a 3 by 3 square mean. In that case, अगर आपको वेक्टर्स एल डी और एल आई है, तो दैट इज हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो फॉर एल आई वेक्टर्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एल डी वेक्टर्स। ओके, सो इट इज रिमेंबर कि अगर वेक्टर्स हमारे पास एल डी हैं और दे फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन जितने उसमें नंबर ऑफ रोज हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। द ओनली we find the determinant only for the square matrix. Okay, so in that case the determinant will be equal to zero. So if there are given ki vectors are linearly dependent and they are form a square matrix by writing all the vectors in columns, then हमारे पास आपको क्या निकालना होगा? डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। तो here given, since given vectors are LD means linearly dependent, तो दिस इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहां से डिटरमिनेंट को इक्वल टू जीरो करने के बाद आपको ए की वैल्यू निकालना है। तो यू हैव टू write like this: 1 1 a, and this is -1 2 and 0, and you have this is 3 3 1 equals to 0, and you know that determinant के वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होते भी इफ वी आर अप्लाइंग द एलिमेंट्री थर्ड रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। सो यू कैन जस्ट हैव 1 1 ऐड कर देते हैं। वी आर जस्ट सिंपली अप्लाइंग दिस रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन। Okay, so this is 1 1 a,
and here will be 0, here will be 3, and this will be a. कोई बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला. 3331 is just equal to 0. Just expand it, find the value. So determinant का हो जाएगा 1. This is 3a31, and the negative of 1, and this we know how to find the determinant of a matrix by expanding with respect to the first row. Okay, plus a, and this is 0 3 3 3, just equal to 0. You just calculate. This is 3 minus 3a, this is 1, and this is negative of 0 minus of 3a. Okay, and this is plus, this is 0 minus 9. So what you will get from here, this is 3 minus 3a, and this is positive 3a, and that is your minus of a, and that is equals to 0. So you have this, and from here you get 9 times a is just equal to 3. This implies you get a is equals to 1 by 3. So this is the answer for this question. So basically the vectors are given which are linearly dependent, and when we wrote all the vectors in columns, and we form a square matrix, then we will take that square matrix is equal to 0 for the finding the unknown constant a. Okay, so today's topic is your row rank and column rank. ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिटर्मिनेंटल रैंक की बात करी थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रो रैंक एंड कॉलम रैंक. Eventually की जो कॉलम रैंक एंड रो रैंक आर द सेम एज द डिटर्मिनेंटल रैंक, बट द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, to knowing the things is different. Okay, so we will study that also. Just a second. Okay, so let's discuss today's topic, that is your row rank. Sania understood how to solve the previous problem? Yes, sir. Okay, so row rank and column rank. So let's define one by one. So let's define first the row rank. So the concept of the linearly independent and dependence we have learned. तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वी हैव अ मैट्रिक्स, और उसके अंदर रोज, कितनी रोज हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो द काउंटिंग ऑफ linear independent rows is called the row rank. Similarly, for the column, the counting of linearly independent columns is called the column rank. Okay, so let's write the definition of it simply. The maximum number of linearly independent rows of a matrix A is called the row rank of A, and is denoted by row rank of A, like this. So this is notation for the row rank. Similarly, we
write the definition of the column rank. We can similarly say the maximum number of Li columns now of a matrix is called the row rank of, and is simply denoted by okay row CE. And let's recall the elementary operations. एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है? हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं एंड 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं. तो इफ यू आर गोइंग टू राइट द रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कौन से होते हैं? इफ वी आर इंटरचेंजिंग ith रो विद द jth वन. ठीक है, हमने रोज को आपस में इंटरचेंज, किसी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन. एंड देन इसको ऐसे भी लिखते हैं RI, G. ओके. सेकेंड होता है वी आर मल्टीप्लाइंग द ith रो विथ सम स्केलर, सम नॉन जीरो स्केलर विद दिस ith रो को हमने किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अ नॉन जीरो नंबर. ओके, so you can also write like this is R of I with K, notation भी चलता है. And number third is mean third elementary row operation, we are replacing this ith row by adding the k times of the jth row. तो Ri plus k times of Rg. क्लियर? और इसको हम जो नोटेट करते हैं लाइक दिस Rj विद की. ओके, सो ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हो गए. सिमिलरली वी हैव एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. Similarly, we can set the ith column. We are interchanging with the jth one. Okay, so you can just have 6 fourth one, and this is C ith column is replaced with the k times of ith column, where k is any non-zero number. Fifth one, and this is sixth one. The ith column is replaced with, so you can just have Ri is replaced with Ri plus k times of sorry Ci is replaced with Ci plus k times of Cj. Clear? So these are elementary row operation and elementary column operations. Okay. सो अब हमारे पास मैट्रिसेस की बात करते हैं. कुछ रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती है. तो वी हैव अ मैट्रिक्स एंड वी अप्लाइंग द elementary row operations only. Then we form another matrix which is known as the
row equivalent matrix. Okay. Similarly, if we apply only the column operations on a matrix and we form another matrix, then that matrix is called column equivalent to the previous one. Okay. So let's define. If we have, suppose that we have a matrix like this, suppose that we have a matrix 1 2 1 0 minus 1 3 and 4 and 6 minus 2. This is a matrix. Okay. If I'm just saying this is a matrix A, whenever we are applying row operation on it, suppose that. So हमने पहला ऑपरेशन हमने कहा कि R2 is interchange with R3. R2 means we are the first row, R1, R2, R3. These are rows. And we are in this way, we can say this is column C1, this is C2, and this is your third column, C3. So now we are interchanging the second row with the third one. Okay. So with the first row will be remain the same. And this now R3 take the position of R2. So this will be 4, 6, and minus 2. And this is 0, minus 1, 3. So now this matrix is different from the previous one. इसको हमने नाम दिया B. तो क्योंकि हमने फर्स्ट A मैट्रिक्स था उसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है और वी गेट दिस B, देन वी कैन से दिस A is row equivalent, it is row equivalent to B. Okay, so this is called the row equivalent. Similarly we अगर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए होते तो हमको कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलती. तो लेट अस डिफाइन इट. इसको हम डिफिनीशन लिख लेते हैं. सो फर्स्ट लिखिए रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. Row equivalent. Okay, so a matrix A is said to be row equivalent to a matrix B if B can be obtained from A by applying some row operations. A by applying in succession a finite number of row operations on A. Okay, and we denote it this is A and this is row equivalent to B, that your R. Okay, you are getting this? Understood? समझ में आ रहा है? Please let me know. Tanya, are you in class? Okay, next. Column equivalent, similarly, you can define the column equivalent. Column equivalent matrices.
can just write the definition, same definition as above. So a matrix is said to be column equivalent to a matrix B if B can be obtained from A by applying some in succession a finite number of column operations. Okay, and we denote it simply like this. This is A is column operation with P. This column equivalent to matrix P. Okay, एक चीज यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम इक्विवेलेंट इट मींस we are applying only elementary column operations. If we talking about the row equivalent, it means we are only applying the elementary row operation. If we are applying some column operation, some row operation, we are getting a matrix that is only called equivalent matrix. We are not able to say that it is column of equivalent or a row of equivalent. Okay, so it is clear about it कि हमारे पास अगर हम कॉलम ऑपरेशन कॉलम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर अप्लाइंग ओनली द कॉलम ऑपरेशंस. Okay, if we are talking about the row equivalent, so we are applying only the elementary row operations and we are getting another matrix B. So if we are defining the now equivalent matrices, so we are applying any of the elementary operation, we are getting another matrix that is called the equivalent matrix, only equivalent matrix. So let's define equivalent matrices. So two matrices A and B matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from the other by applying a finite number of elementary operations. In succession. Then we write, you can say simply equivalent. So if you are talking about equivalent matrices, then we are free to apply any of the row or column operations, elementary operations. Okay.
So let's we are going to very important matrix to write the definition of the very important matrix that is called row echelon form. सानिया यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. रो echelon form Yes, sir. of a matrix. ओके, इसको शार्ट में हम लोग आर ई एफ बोलेंगे। आर ई एफ, इसका मतलब बोलते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म। एंड टू फॉर्म अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि हम कैसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी मैट्रिसेस को, और फिर वहां से हम रैंक को देखेंगे। अभी हम बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़ेंगे ऑन द बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, और उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस को टू टू चेक द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। So a matrix, a matrix is said to be in Roy-echelon form if number first we have all zero rows in the bottom of the matrix, है ना। So we have all zero rows. Zero rows means all the elements of the row are zero rows, if any, are at the bottom of the matrix। ठीक, सेकेंड वन, किसी रो के अंदर अगर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है ना, दैट इज राइट ऑफ द प्रीवियस वन। मतलब जो पहले हमारे पास नॉन, पहले जो रो है उसकी मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट है नॉन जीरो, उससे राइट साइड में ही एग्जिस्टेंस में हो, तो यू कैन जस्ट राइट हियर द फर्स्ट नॉन जीरो elementary row element of every row is on the right hand side of the first non-zero row या non-zero element in the preceding one। Okay, in the preceding row। Okay, so let us write some examples which are row equivalent matrices। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, if I am writing matrix like this is 1 0 2, this is 0 3 5 0 0, so this is a row equivalent, it satisfied both the one thing is कि if there is any zero row तो that is in bottom। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जीरो रो है जो कि हमारे पास बिल्कुल
लास्ट में बॉटम में पड़ी हुई है, दिस इज अ जीरो रो, इफ देयर एग्जिस्ट एनी जीरो रो। ओके, सेकेंड वन क्या कहता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर इफ देयर इज सम नॉन जीरो रो इन इन सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द सेकेंड रो इज हेयर, तो ये हमारा जो थर्ड है दैट शुड बी इन द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रीसीडिंग रो। इससे पहले वाली जो हमारी रो है उससे हमारे पास राइट में ही होना चाहिए। ठीक है, सो ये कंडीशन फुलफिल हो रही, इट मीन दैट इफ देयर इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट, तो उसके जो नीचे के जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं दैट ऑल जीरो। ठीक, इफ देयर इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो, तो ऑल द एलिमेंट all the element is below that element are zero. Similarly, if there is, and also the non-zero element is lies in the right of the previous one। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थ्री, तो ये हमारे पास आर ई एफ है, दिस इज द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। बट इफ यू आर राइटिंग सम मैट्रिक्स लाइक दिस, सपोज दैट हमने कुछ एक मैट्रिक्स लिखा, जीरो वन टू थ्री एंड फाइव जीरो सिक्स minus 2 and 3, and we are writing 0, यहाँ पर भी आप 0 लिख दीजिए, और यहाँ पर 5 दिस इज 0, और यहाँ पर एक 0 0 डाल दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है दिस इज नॉट आर ई एफ, दिस इज नॉट आर ई एफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वन नॉन जीरो एलिमेंट है। अब दूसरी रो जो है उस रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट उसके राइट में ही होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं। ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड। ओके, सो इसको हम आपस में रो ऑपरेशंस को अप्लाई करके इसको हम आरईएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को। में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी आर इंटरचेंजिंग फर्स्ट रो विद द सेकेंड वन। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी 5 0 6 -2, एंड हेयर इट विल बी 0 1 2 3। ओके, एंड नाउ दिस इज 0 0 5 0 एंड 0 0 0 0 0। ओके, तो नाउ इट इज अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बन गई। ठीक, यू कैन जस्ट, एंड दिस पोजीशन वेयर नॉन जीरो एलिमेंट आर देयर in a row, that is called pivot position। या pivot elements या pivots सिंपली। ओके, और क्लियर, तो दिस इज अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स होगी उसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एंड वी कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, देन वी कैन से दैट इज अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो यू कैन जस्ट राइट अ रिमार्क। So the first non-zero, you can just write the first non-zero, जो ये हमने प्योर बोला है ना, दैट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एनी रो इज कॉल्ड की एलिमेंट। इज कॉल्ड की एलिमेंट और प्योटल एलिमेंट या सिंपली प्योट। ओके, तो रिमेंबर दीज थिंग्स अबाउट द रो इक्विवेलेंट फॉर्म।
So similarly, we have a row reduced echelon form. So let's define that matrix is also row reduced, RREF, row reduced echelon form. सो अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप समझिएगा एंड वी अप्लाई इन क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी in row-echelon form, row reduced echelon form, if पहली बात तो वो हमारे पास आरईएफ होनी चाहिए, है ना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट, इट शुड बी इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, इट इज इक्विवेलेंट फॉर्म। पहली बात तो ये वो आरईएफ है। सेकेंड वन, एवरी की एलिमेंट या योरी पिवोट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू वन। ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ये नेसेसरी नहीं था, वहां पर हमारे पास प्योर पोजीशन वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी सम जीरो, सम नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर। बट जो रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है उसके अंदर हमारे पास जो की एलिमेंट है दैट शुड बी यूनिटी। ओके, so you just write here that every key element is unity. Okay, number third, the element above the key element is every column is zero। अभी तक देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो की एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये आरईएफ है, तो ये की एलिमेंट है हमारे पास, सॉरी, ये तुम्हारा की एलिमेंट है 5। बट 5 के ऊपर के सारे एलिमेंट अभी हमारे पास नॉन जीरो है, दैट इज ओके फॉर द आरईएफ रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो हमारे पास अगर हम रो रेड्यूस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे के सारे की एलिमेंट वन होने चाहिए, और की एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट, कॉलम में ऊपर के सारे एलिमेंट भी जीरो होने चाहिए। अगर हम रो इक्विवेलेंट में फॉर्म में देखेंगे तो की एलिमेंट के नीचे के कॉलम में नीचे के सारे एलिमेंट, बिलो द की एलिमेंट ऑल विल एलिमेंट विल बी जीरो। बट यहाँ पर कॉलम एबव द की एलिमेंट आल्सो शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, सारे के सारे कॉलम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो यू कैन जस्ट राइट इन थर्ड वन, द द एलिमेंट्स above the key element in every column are all zero।